Okay, let's start. Good evening. So we are into derivatives. Quick recall of what is derivatives. Derivatives, what we are referring to is here a contract that derives its value from an original contract, and that can be any incident, that can be any obligation, that can be any commitment, that can be any asset, which we basically call in our derivative language as an underlying asset. Now, when you study derivatives, what you have to remember in your mind always that for a company, there are always two parallel aspects. One is your original contract, which is having some obligation, some commitment, and then another is derivatives. Derivatives are dependent on original contract, and at the same time they are independent also. Now it is like original contract, if it is existing, if it exists, then only this will exist, right? Then only this will exist. If it ceases to exist, if it ceases to exist, then derivatives contract will automatically cease to exist. If original contract is having an outcome like profit, then it is not necessary that this will also have profit. Outcome is independent. Outcome can be anything. If here outcome is loss, here again outcome can be anything. So when we say derivative are definitely connected to your original contract, but at the same time they are independent also. So if you're having profit, you may not have anything here. If you have loss, you may not have anything here. If you have loss, you may have profit here. If you have profit, you may have loss there. Okay. So what is the net situation to the company? Net situation to the company is always the combined position of both. Net situation of company is always equal to combined situation of both. Remember, whenever you are studying derivatives, the basic outline is your original commitments are never to be changed. Original commitments would lie as it is. Derivatives are add-on to that. That may give you benefit, that may give you loss as well. That you have to decide, that you have to plan. The net situation of the company is always the combined situation. In our syllabus, what we are studying is different kinds of derivative contracts. We are studying different kinds of derivative contracts. There are innumerable derivative contracts in this world. We cannot make any exhaustive list. It is impossible. But out of these, there are some very, very popular derivative contracts that we aim to study. And there are four such contracts, if you remember. One is forward rate agreement, which is forward interest rate agreement. Second is financial swaps. Third is futures, and the fourth is options. These are the four things that we aim to study in our curriculum. Okay, this is never the end of all derivative instruments. Okay, so today's discussion, ladies and gentlemen, is financial swaps. Yeah, you might be pronouncing it as swaps, but let's be a little bit of American here. Let's pronounce it as swap.
Financial swap. Basics of derivative should never be forgotten when you are studying any kind of derivative contract. Basics is saying that there has to be one original contract whose commitment are to remain as it is, and then there would be one add-on to that contract, that is a derivative contract, and its outcome is independent of what can happen over there. Okay, and ultimately you have to combine the net to find the net situation of the company. Okay, so now we have to discuss what is swap about. Okay, first basic thing, when we are studying the word swap means exchange. Exchange means to give and take, to give and at the same time to take. हिंदी में बोले तो लेना और देना. जैसे गिव मतलब हो गया देना, एंड लेना भी पड़ेगा. देना एंड लेना. Okay. So we have to understand what is this exchange about. Okay. इसके लिए एक थीम है. ये थीम पे सबसे ज़्यादा टाइम हमें इन्वेस्ट करना है. If you understand the theme, you understand the chapter. And I told you from the very beginning, in all the derivative instruments that we're studying, it's only the concept. If you have mastered the concept, if you have understood the concept, you can solve any sum. So you have to invest maximum time on concept. So if you're understanding the concept, you will be definitely solving all the sums of your exam. So let's begin. मैं आपको एक सेंट्रल थीम समझा रहा हूँ. सेंट्रल थीम ऑफ स्वैप्स. ये आप लिख भी सकते हैं अपने स्पीड पे. मैं आपको लिखने के लिए ज़्यादा मौका नहीं दूंगा, मतलब मैं रुकूंगा नहीं आपके लिखने के लिए. आप लिख सके तो लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाए तो एक बार छोड़ दीजिएगा. आप समझ लीजिए, समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आप साथ साथ लिख सकते तो फाइन, नहीं लिख सकते तो एक बार छोड़ दीजिएगा, बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा. समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सेंट्रल थीम में समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, नाउ से इमेजिन अ सिनेरियो. बहुत ध्यान दीजिएगा. हाँ, देयर इज अ कंपनी ए which has borrowed borrowed 100 crores of rupees from its lender named Bank A, and he has contracted with Bank A to pay fixed rate of interest at the rate 10% per annum. Okay, he has a contract with Bank A. This is the original contract. Okay, so company A's annual interest outflow can be calculated as, say, for year 1 it would be of course 100 crores into 10%, 10 crores. For year 2 it would be again 100 crores into 10%, 10 crore, right? There's no objection here. It is a very simple situation. Now at the same time, you imagine another company in some other locality, in some other city, company B. When you are studying company B, forget about company A. Do not see what is given for company A. It has also a borrowed amount of rupees 100 crores.
सर इसका भी 100 उसका भी 100, हाँ इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में संजोग, संजोग से, कोइंसिडेंस, ऐसा मैचिंग बैठ गया. नाउ इट हैज बोरोड दिस फ्रॉम बैंक बी, but his commitment is at floating interest rate. Now floating interest rate is usually tied up with one variable interest rate index. Interest rate index examples: LIBOR, MIBOR, TIBOR, SIBOR, HIBOR. याद आ रहा है? Another T T bill, treasury bill is also something which has variable interest rate. T bill एक नया नाम बताया, मैं सब बताऊंगा आपको. So it has been tied up with floating rate index, and floating rate index will be different each year. It would be announced from time to time. Okay, so floating rate index is, for example, LIBOR plus 1%. Okay, but LIBOR is not known as of now, and this commitment has been frozen with bank B by company B. This is the original contract of company B. So if I ask you to calculate annual interest outflow of this company for year 1, obviously first I'll have to find out what was the applicable LIBOR. So we could find that LIBOR was 8%. If LIBOR is 8%, what would be the outflow? 100 into 9%. Please participate and please get involved. That is 9 crore. Year 2, say LIBOR was 11.5%. So it would be 12.5 के हिसाब से 100 into 12.5 is equal to 12.5 CR. Okay. So this is the situation going on with the two independent companies in two different localities. Okay. Now what company A feels, कंपनी ए को क्या अंदर में लग रहा है, कंपनी बी के बारे में कुछ नहीं जानता. वापस कट टू कंपनी ए, कम बैक टू सीन इन कंपनी ए. कंपनी ए के मैनेजमेंट को ऐसा फील हो रहा है कि ये हम लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देकर बेवकूफ बन रहे हैं. उनको ऐसा फील हो रहा है हम लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देकर बेवकूफ बन रहे हैं. दे हैव प्रोजेक्शन दैट इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स वुड डिक्लाइन. व्हाई शुड वी पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट? अंडरस्टूड? तो इनको बहुत अजीब सा लग रहा है ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देने में, एंड दे आर प्लानिंग टू कन्वर्ट कि हम लोग किसी तरह से फ्लोटिंग में आ जाए. वी शुड कम टू फ्लोटिंग, वी शुड कम टू वेरिएबल. जैसा मार्केट का इंडेक्स रेट अनाउंस होगा वैसा हम लोग इंटरेस्ट देंगे. हम लोग क्यों ज्यादा दें, हम लोग एक कंस्टेंट लेवल पे चल रहे हैं तो हम ज्यादा पे कर रहे हैं. उनको ऐसा फील हो रहा है. देयर ऑब्जेक्टिव इज चेंजिंग, देयर प्लानिंग इज गेटिंग हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ दिस फिक्स पेमेंट. संजोग देखिए उधर कंपनी बी को क्या महसूस हो रहा है. उसको ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट इंडेक्स रेट के ऊपर 1% जोड़ जोड़ के हम लोग जब बैंक को दे रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा सिस्टम चल रहा है. प्लानिंग करने में बहुत दिक्कत आती है. एक फिक्स पेमेंट रहे तो आदमी मेहनत करे, समझे कि हाँ भाई मुझे हर साल इतना ही देना है. यहाँ तो कभी 9 देना है तो कभी 12.5 देना है. अगला साल क्या देना है पता नहीं. तो समझ में नहीं आता कितना कमाए, कैसे कमाए, किसको किससे चैनलाइज करें, किसको किससे लिंक करके रखें कि इंटरेस्ट पेमेंट में दिक्कत ना है. दोनों के अपने अपने दुख है. समझ में आ रहा है? तो इनके पास रास्ते क्या है? एक रास्ता है, सबसे इजी रास्ता. कंपनी ए बी को जानता नहीं, बी ए को जानता नहीं. ए जाएगा अपना लोन क्लोज कर देगा. तो मेरे को लोन नहीं लेना है, ये लोन क्लोज करेगा, दूसरे बैंक के पास जाएगा, नया लोन ले लेगा और उसको उसी कंडीशन पे बोलेगा कि मुझे वेरिएबल इंटरेस्ट रेट दे दो. सो इफ इट फील्स floating is appropriate for better planning for future of the company, then what option it has? Then it has an option, take the new loan. बेसिकली एक और तरीका होता है, जैसे फाइनेंस मार्केट में एक वर्ड चलता है बैलेंस ट्रांसफर करा लो. सुने ये शब्द? बीटी करा लो, एब्रीविएशन में बोलते हैं
बैंक वालों से जब बात करोगे तब वो लोग ये सब टर्मिनोलॉजीज अच्छे से समझते हैं। बैलेंस ट्रांसफर करा लो, मतलब ये लोन को दूसरे लोन में दूसरे बैंक में कन्वर्ट करा लो, दूसरा बैंक आपके टर्म्स के हिसाब से लोन चेंज कर देगा। बट if you're going to that if you're going to that, the problem with this is there would be hell lot of compliances, and the process may take another 4 5 months or so. It may take, because approval from other bank has to come. For that, entire verification would be done, entire revaluation of mortgage assets would be done. Okay, and then the money would be procured from here, it would be settled with there, and then everything has to be arranged according to the new bank. So there is a transition time period. It is not favorable for the companies to get their loan transferred. Usually जब हमारे घर के लोन होते हैं ना, हम लोग होम लोन को ऐसे ट्रांसफर कर लेते, चलता है, ठीक है, बट इट इज नॉट वाइज फॉर कंपनीज टू गेट द लोन ट्रांसफर्ड बिकॉज देयर इज tremendous compliances. If it is a listed company, it will get hung because of EGM, AGM and all. There is tremendous compliances. Okay, so but it has an option. Then it has an option to take a new loan. That's the most easiest option to write, of course, but to execute it is most difficult option. लिखने में बड़ा आसान लगा कि नया लोन ले लो, पुराना को बंद कर दो, but the thing is execute कराना is very very difficult. The same way in company B, it feels that for better planning, fixed interest rate is more appropriate for future of the company. Then what is the option it is having? It is also having the same option. It has an option. What is it? To take a new loan. Floating को बंद करा दीजिए और फिक्स में चेंज हो जाइए. ओके, संयोग देखिए, संयोग, कोइंसिडेंस. इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमन निकल गया. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझते हैं क्या? जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है और एक साथ बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्टर होता है. तो कंपनी ए का बोर्ड मीटिंग में जब ये बात डिस्कस हो रही थी कि किसी तरह से ये फ्लोटिंग में चेंज हो जाए, कंपनी बी में ये बात डिस्कस हो रही थी कि किसी तरह से फ्लोटिंग फिक्स में चेंज हो जाए. सुन लिया दोनों तरफ मीटिंग में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और बस उसने भिड़ा दिया टाका. समझ गए? टांगा भिड़ा दिया. तो भाई आपकी जो जरूरतें हैं वो देखिए, अगर ऑफिशियल तरीके से जाए तो पॉसिबल क्यों नहीं है? बदलना लोन को पॉसिबल है, बट इतने कंप्लायंस में क्यों फंसते हैं? आप लोग एक काम करो, सेपरेटली एक एमओयू साइन करो. मैं बीच में खड़ा हूं, मैं तो दोनों में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, देख रहा हूं दोनों कंपनी को. आप कंपनी बी वाले, आपको डर क्या चीज का है? मैं हूं ना कंपनी ए से जुड़ा हुआ. कंपनी ए वाले, आपको डर क्या चीज का? मैं हूं ना बी से जुड़ा हुआ. बी वाला दूसरा डायरेक्टर सोच रहा है, तो भाई ये बीच में जुड़ा हुआ डायरेक्टर को क्या चाहिए? मतलब भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दोनों कंपनी ग्रो करे तो मेरे को कहीं ना कहीं कमाई बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा. तो हम चाहते हैं आप लोग दोनों का भविष्य अच्छे से चले, इसलिए आप लोग एक सेपरेट एमओयू साइन करिए और अपना फिक्स्ड को फ्लोटिंग में चेंज करिए. वो कैसे होगा? वही बताने आए हैं भाई, ये क्लास इसी के लिए तो है. वो कैसे होगा, इसीलिए तो ये पढ़ाई चल रही है. आप अपने फिक्स को फ्लोटिंग कर लीजिए और ये फ्लोटिंग को फिक्स कर लेगा. ये एक सेपरेट एमओयू से होगा. इसकी भनक कंपनी ए बैंक ए को नहीं पढ़ने देगा और कंपनी बी बैंक बी को नहीं पढ़ने देगा. ओरिजिनल कमिटमेंट, ओरिजिनल ऑब्लिगेशन शुड कंटिन्यू एज इट इज. Then how the exchange will occur, how the swap will occur, that you have to understand. Okay, so let us say for alternative option, what the new director suggested, what the non-executive director of the company suggested is to enter into a swap agreement, to enter into a swap
agreement. Swap is a kind of agreement. Swap is a kind of MOU between the two companies to cover up their intentions. It will cover up their intention. It will let them plan the way they want it to and how it is going to be. कंपनी ए देखिए क्या देना चाहता था. अभी आप वापस से सिचुएशन में आइए. कंपनी ए वेरिएबल देना चाहता था, बट क्या दे रहा है? कंपनी ए फिक्स्ड दे रहा है और कंपनी बी फिक्स्ड देना चाहता था और वो वेरिएबल दे रहा है. वेरिएबल यानी फ्लोटिंग दे रहा है. सो ए और बी में एक एक्सचेंज का एमओयू साइन होगा. किस तरह से कि ए जो फिक्स देता था वो अपना फिक्स्ड इसको पास ऑन कर देगा, अपना फिक्स्ड इसको दे देगा, और बी अपना वेरिएबल यानी कि फ्लोटिंग इसको दे देगा. ध्यान से सुनिएगा. ए अपना फिक्स्ड बी को दे देगा. तो सोचिए ए को फिक्स्ड अब देना है क्या? सोचिए एक बार, विजुअलाइज करिए. ए का यहाँ पे ऑलरेडी कमिटमेंट फिक्स पे था. अगर उसने अपना फिक्स्ड यहाँ पे दे दिया तो फिक्स कैंसिल हो गया. हाँ जी, ए का फिक्स्ड और फिक्स्ड कैंसिल हो गया. करेक्ट? इज इट फाइन? और बी से वेरिएबल मिल गया तो ए का नेट में क्या आ रहा है? वेरिएबल आ रहा है. वैसे बी का कमिटमेंट में फ्लोटिंग था, तो फ्लोटिंग अगर बी ने ए को पास ऑन कर दिया तो फ्लोटिंग कैंसिल हो गया और बी ए से फिक्स्ड ले रहा है तो बी का फिक्स्ड का कमिटमेंट आ गया. समझ में आ रहा है सर? ऐसे इन प्रिंसिपल समझ में आ रहा है, बट एग्जीक्यूट कैसे होगा थोड़ा सा डिटेल में बताइए. आउटफ्लो सच में वेरिएबल का फिक्स्ड हो जाएगा, फिक्स का वेरिएबल हो जाएगा? बिल्कुल, आपको पूरा वही सेटलमेंट समझना है. जब ये स्वैप एग्रीमेंट एंटर किया जाएगा, उस एग्रीमेंट में एक प्रिंसिपल का वैल्यू यानी अमाउंट ऑफ लोन का वैल्यू भी डाला जाएगा, एंड दैट इज अ नोशनल प्रिंसिपल ऑफ यूजुअली द अमाउंट विच दे वांट टू एक्सचेंज. यूजुअली इट इज सपोज टू बी the amount of loan which they were already having. This is notional principle. Why it is notional? I'll come to that. You just understand that swap का agreement का एक face value होता है. Face value is notional principle of 100 crores. And how the arrangement would be done? A B को क्या बोलेगा? ध्यान से सुनिएगा. A B को क्या बोलेगा? देख भाई A, मैं बैंक A से छुटकारा तो नहीं पा सकता, वो तो मेरा ओरिजिनल कमिटमेंट है, और अपने को थोड़ी बैंक A को बोलना है. ध्यान से समझिएगा. अपने को थोड़ी बैंक को जाके बोलना है, फिर तो बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा, ओरिजिनल कमिटमेंट सारे हिलने लगेंगे. बैंक को जितना देना मैं एक बार दे दूंगा और मैं आके तेरे से ले लूंगा. वैसे बी क्या बोलेगा? बैंक बी को जो देना है वो मैं दे दूंगा, फिर मैं वो तुमसे आके ले लूंगा. तो आपस में दोनों पार्टी का रिसीवेबल पेबल खड़ा है. ए को कुछ लेना है ना? ए पास ऑन भी कर रहा है. बी को कुछ लेना है, बी पास ऑन भी कर रहा है. तो जो लेना देना होगा वो तो इंटरेस्ट अमाउंट का ही होगा. प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल इनके पास ऑलरेडी है. इनको 100 करोड़ और नहीं चाहिए. आप ऐसा मत सोचिए ए को 200 करोड़ चाहिए. ए को 100 करोड़ चाहिए तो बैंक से मिला हुआ है. ए को खाली इंटरेस्ट का दुख है. वापस से ओरिजिनल प्रिंसिपल बी से एक्सचेंज करेंगे तो बी 100 करोड़ लाके ए को देगा तो ए के पास तो 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे. ए को और प्रिंसिपल नहीं चाहिए. ए को सिर्फ इंटरेस्ट का टेंशन है, बी को सिर्फ इंटरेस्ट का टेंशन है. अब इंटरेस्ट इज जस्ट अ रेट. इंटरेस्ट इज ऑलवेज एट सम स्पेसिफाइड रेट. रेट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद समथिंग टू गेट द अमाउंट. उनको इंटरेस्ट अमाउंट का दुख है. किसके ऊपर? 100 करोड़ के ऊपर. ये 100 करोड़ कभी एक्सचेंज नहीं होंगे इन दोनों में. ये 100 करोड़ जस्ट बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है. इसका दुख जो ए बी को ट्रांसफर कर रहा है, बी ए को ट्रांसफर कर रहा है, उसका इंटरेस्ट अमाउंट वो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज द प्रिंसिपल अमाउंट. ये प्रिंसिपल सिंस कभी एक्सचेंज नहीं होगा इसलिए उसको नोशनल प्रिंसिपल रखा गया. एक होता कि ए पूरा 100 करोड़ रुपया बी को दे रहा है और बदले में इंटरेस्ट ले रहा है. बी पूरा 100 करोड़ ए को दे रहा है और बदले में इंटरेस्ट ले रहा है. ऐसा तो यहाँ नहीं हो रहा.
यहाँ तो ए अपने बैंकर से लिया हुआ है, बी अपने बैंकर से लिया हुआ है, बस दोनों को अपने बैंकर को जो इंटरेस्ट देना होता है उसमें दुख हो रहा है। तो जो इंटरेस्ट के कारण इनका मॉनेटरी लॉसेस है, मॉनेटरी गेन या लॉसेस वट एवर इज हैपनिंग, दैट इज गेटिंग सेटल्ड। ओके, so again basically we are saying interest difference is getting settled. Interest difference is getting settled means interest has to be multiplied with some principal amount so that you get the net amount of interest. तो प्रिंसिपल अमाउंट कभी एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए नोशनल, और नोशनल रखना इसलिए जरूरी है, वरना हम अमाउंट निकालेंगे कैसे। ओके, सो व्हाट विल हैपन, ये स्वैप किस तरह से होगा, आप सोचो ए ने अपना फिक्स्ड बी को दे दिया, ओके, एंड बी ने अपना वेरिएबल ए को दे दिया। लेट अस थिंक फ्रॉम एज एंगल फॉर द टाइम बीइंग, फॉरगेट अबाउट बी। आफ्टर दिस स्वैप अग्रीमेंट, after swap agreement, what is the situation in company A? Let us understand. कंपनी ए का ध्यान रखना, मेरा जो बेसिक्स था ईयर 1 का, इंटरेस्ट आउटफ्लो किस तरह से आएगा, ओरिजिनल कमिटमेंट एज इट इज रहेगा, यू कैन नॉट टेम्पर द ओरिजिनल कमिटमेंट। ओरिजिनल इंटरेस्ट टू बैंक ए वो तो देना ही है। वो कितना रुपया था, मैंने वर्किंग में भी बताया था ना, 10 करोड़, 10 करोड़, ध्यान दीजिए 10 करोड़। ओके, ये तो देना ही है। नाउ अब इसको पास ऑन करा दीजिए, पास ऑन करा देंगे तो ये आउटफ्लो है कि इनफ्लो है, ध्यान दीजिएगा, ए के लिए आउटफ्लो है। अब ये 10 करोड़ पास ऑन करेंगे किसको, बी को। तो बी के खाते में हम लोगों को रिसीव कितना करना है, फ्रॉम बी हम लोगों को रिसीव कितना करना है, हाँ जी, रिसीव मतलब ये 10 हम पास ऑन किए ना, तो बी देगा ना इसको, ये अमाउंट तो बी देगा। अब 10 करोड़ आप बैंक ए को दे दीजिए, आप कंपनी ए बनिए, 10 करोड़ अपने बैंक को दे दीजिए। अब ये 10 करोड़ रिकवरी करिए बी से, यू कैन से रिकवरी ऑफ योर 10 करोड़। इफ यू आर फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट वर्ड टू अंडरस्टैंड, यू कैन टेक इट एज रिकवरी ऑफ 10 करोड़। नाउ बी विल ऑल्सो डिमांड कि भाई तूने बोला था ना कि तू वेरिएबल देगा, तो मुझे वेरिएबल का पेमेंट करो। वेरिएबल यानी कि फर्स्ट ईयर का पेमेंट वेरिएबल में कितना था, 9, तो बी विल डिमांड द पेमेंट ऑल्सो। तो पेबल टू बी इज 9 फॉर वेरिएबल पार्ट, राइट, अंडरस्टैंड। सो आप देखिए यहाँ पे नेट रिकवरी कितना हो गया, ये 1 इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, रिकवरी 10 हुआ, सो इट इज एन इनफ्लो, आउटफ्लो हमें देना है 9, तो नेट इनफ्लो आया 1 का। सो ए के ऊपर नेट लायबिलिटी कितने की आई, नेट ऑफ ईयर 1 9 करोड़। प्रेजेंटेशन भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व करिए। ईयर 2 में अगर एक बार और ट्राई करें आप, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ईयर 2 में बैंक को ओरिजिनल इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ओरिजिनल इंटरेस्ट टू बैंक ए 10 करोड़। फ्रॉम बी वी आर गोइंग टू रिकवर दिस 10 करोड़, भाई तू दे दे मेरे को, तेरे बिहाफ में मैंने बैंक में दे दिया। हाँ, अब बी बोलेगा अच्छा ठीक है, मेरा जो फ्लोटिंग तूने लिया दोस्त, वो फ्लोटिंग तू दे दे। तो फ्लोटिंग का कितना, बी का फ्लोटिंग का कितना है 12.5। सो ये 12.5 अब बी को पेएबल हो गया, पेएबल टू बी इज 12.5। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द नेट, नेट इज 2.5 पेएबल, राइट, that is payable which is outflow. So what is the net of year 2? Net of year 2 would be 10 is the outflow, and this payable to be is also outflow. So 10 plus 2.5 is 12.5. Okay. Similarly, you try to grab the calculations after swap for company B. Try to understand the situation. In company B, first would be the original commitment. Never forget that. Original commitment is with बैंक बी। बैंक बी को वो कितना रुपया देगा, 9 करोड़ देगा, और फिर ए के साथ सेटलमेंट करेगा।
ए के साथ बात करेगा कि भाई देखो मैंने 9 करोड़ आपके लिए बैंक में दे दिया, क्योंकि आपने फ्लोटिंग लिया है तो आपका है ये फ्लोटिंग, तो रिकवरी कितना करेगा, ये 9 करोड़, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. प्लीज डू नॉट सैक्रिफाइस अंडरस्टैंडिंग फॉर राइटिंग. You can write later on also. 9. And then from this, payable will also happen. Payable will happen for fixed amount. For B, imagine the situation, B will be now paying the fixed, it is taking fixed from A. So payable of fixed amount is 10, right? So ultimately what is the net? It is inflow and this is outflow. So what you're understanding is net outflow is of 1. And original interest to bank B was also outflow. So what is net of year 1? It is equal to 10. 10 आ रहा है ना? Similarly year 2 में क्या होने वाला है? Try to understand year 2 में original interest to bank B तो देना ही पड़ेगा ना? कितना रुपया? 12.5. ये तो अपना लिबोर प्लस 1 ले ही लेगा. From A क्या होगा? A से रिकवरी कर लीजिए आप, ये फ्लोटिंग वाला रिकवरी, that is inflow will be 12.5. एंड फिर A को देना भी तो है. कौन सा देना है? अपना फिक्स वाला हिस्सा. तो ये हमारा इनफ्लो है, ये हमारा आउटफ्लो है. तो नेट में इनफ्लो क्या आ रहा है? 2.5. एंड इन दोनों का नेट क्या आ रहा है? नेट ऑफ ईयर 2 12.5 मैंने बैंक बी को दिया और इनफ्लो मेरा हाथ में 2.5 का आया. So 12.5 minus 2.5 is equal to 10. Now you see what has happened after the swap agreement. Is their intention fulfilled? B के केस में क्या आ गया? 10-10. And what B was planning, it feels fixed interest rate is appropriate for future. And A के खाते में क्या आ गया? 9 और 12.5. Is it? 9 or 12.5. And this was only the intention of A. That was floating is more appropriate for their future. Okay, so if you have understood this, ladies and gentlemen, I must congratulate you. You have understood the swap. अभी एक बेसिक चीज आपको ये समझना है कि देखिए एक और बी में सेटलमेंट कैसे हो रहा है, हाउ दे आर गेटिंग द सेटलमेंट इन ईयर 1 एंड ईयर 2. Let's talk about year 1 first. Check year 1 properly. Year 1 में A के यहाँ पे इनफ्लो आने वाला है 1 लाख का, तो बाय डिफॉल्ट B के यहाँ पे आउटफ्लो होने वाला है. अरे भाई खाता तो मिलेगा, डबल एंट्री सिस्टम. A बोलता है मेरा इनफ्लो आने वाला है तो B के आउटफ्लो आने वाला है, तो इसका सेटलमेंट होगा कैसे? B will pay to A. कितना रुपया? 1 करोड़ रुपया. ये 1 करोड़ क्या चीज का? प्रिंसिपल का है? नो, प्रिंसिपल एक्सचेंज ही नहीं हुआ इसलिए नोशनल प्रिंसिपल. इट इज जस्ट द सेटलमेंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सिमिलरली इन सेकेंड ईयर यू सी ए का पेएबल निकल रहा है 2.5, सो ऑब्वियसली बी का रिसीवेबल निकलेगा. तो नाउ इन सेकेंड ईयर ए विल पे टू बी. Right? What is the difference? Difference is 2.5. You see, the basics of derivative, that original should not be tempered with. Original अगर छेड़ दिया ना तो derivative हिल गया. Derivative is just an add-on. देखिए ओरिजिनल में हर समय आउटफ्लो आया. आप देखो ईयर 1 में भी ओरिजिनल में आउटफ्लो है, ईयर 2 में भी ओरिजिनल में आउटफ्लो है. डेरिवेटिव से आप कभी कमाते हो तो कभी गंवाते हो. आउटकम ऑफ डेरिवेटिव इज इंडिपेंडेंट. ओरिजिनल में आउटफ्लो है तो डेरिवेटिव में भी आउटफ्लो का जरूरी नहीं है. डायरेक्शन शुड नॉट बी सेम. ओरिजिनल में आउटफ्लो है तो डेरिवेटिव में इनफ्लो आ रहा है, ओरिजिनल में आउटफ्लो है तो डेरिवेटिव में आउटफ्लो आ रहा है. कुछ भी आ सकता है, हो सकता है डेरिवेटिव में कुछ भी ना आए. ओके, डेरिवेटिव का कमाई या नेट पोजीशन और ओरिजिनल का नेट पोजीशन इज द नेट पोजीशन टू द कंपनी. कंपनी इस नेट पोजीशन के लिए ही सारा डेरिवेटिव्स में एंट्री करता है. ये नेट पोजीशन जो न्यू वाला कंपनी के लिए है वो पुराने से कम होना चाहिए या फिर कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करवा देना चाहिए, तो काम हो जाएगा. ओके, दिस इज ऑल.